So we have a very special guest today and I think हम सब उनके बारे में बहुत थोड़ा ही जानते होंगे या शायद नहीं भी जानते होंगे बट मैंने यही सुना कि that his talks are very very informative, very deep और जो भी सुनने और को मिलेगा या जो भी आज समझने को मिलेगा that's going to be extraordinary. एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ ब्रूस लिप्टन जी सिनर्जी जो उन्होंने खुद भी दी थी और जब हमने उसको वापस ट्रांसलेट किया था दैट सिनर्जी आई रिमेम्बर बोथ ऑफ इट एंड दैट टू मिडल ऑफ द नाइट इफ यू ऑल रिमेम्बर हम रात को और उनके जाने के बाद भी और 1.5-2 घंटा वी वर डूइंग लॉट ऑफ एनालिसिस लॉट ऑफ शेयरिंग एंड वी ऑल वर सो एक्साइटेड सो आज भी एक एंगल समझने को मिलेगा एक जो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है अपनी टॉक्स में दिया है लेट्स go with that and before that of course I'll just introduce जो मुझे उनके बारे में पता है हैंस विलियम is a mystic best-selling author and illustrator of over 200 books for all ages including some books together with Byron Katie. His books have sold over 40 million copies and are translated into 30 languages. His YouTube videos are explaining and depicting the spiritual laws of the universe. They are non-denominational and have become an important source of inspiration and help for his over 15 million viewers around the world. Hans Willem has written and illustrated over 220 books for children and adults. Many have been translated into more than 30 languages and have become successful animated television series that are enjoyed by children all over the world. The total sales of his book have exceeded 40 million copies worldwide. Hans was born in Germany. He lived for many years in Africa before moving to America. His work can be found in the permanent collections of the Mazza Museum of Art, Dodd Center at the University of Connecticut, Curlin Collection of University of Minnesota, De Grumont Collection at the University of Southern Mississippi. As a noted speaker, Hans have been inspiring audience around the world with his spiritual and life-affirming concepts that he shares in many of his books and videos. So we welcome Manoj ji first to give us beautiful insight about the guest today and start his sharing. Jai Gurudev, everyone. Jai Gurudev, Dr. Hans Wilhelm. Well, I have not met you, but I have met you. I have not seen you, but I have seen you. I have not heard you, but I've heard you. That means, and that's what we are going to experience today. So we just got a message sometime back. He is not well today morning only. He got up unwell. So we sent him a message to join in whenever he can. और जब भी उनको टाइम मिलेगा वो आ जाएंगे लाइव लेकिन वो लाइव ही है बिकॉज आई सॉ सम ऑफ हिज वीडियोस ब्यूटीफुल वीडियोस मतलब इतना एकदम माइंड बॉगलिंग वीडियोस है और उसी का हम ही विल स्पीक इन इंग्लिश आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी और आप लोग ध्यान से सुनो इट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड ओके एंड ऑफ कोर्स he will come sometime and whenever he comes he will add on live and let's see how it goes. We sent him a message to join but today morning only he was unwell but I said no, we continue. Someone suggested yes, we will start with some we'll have some other synergy. I said nahi, itna deep topic है और इतना मजेदार टॉपिक है कि आप तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और मैं नहीं करूंगा. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू नो जो सब लोग जो वीडियोस ऑन करके रखे हैं मैं किसी को भी पूछूंगा अब ट्रांसलेट करो. तो वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट वी स्टार्ट ऑफ. जो पहला जो टॉपिक है छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन जो पहला टॉपिक्स है लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मरने के बाद क्या, मृत्यु के बाद क्या. ओके, इंटरेस्टेड और नो? एंड वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन. मतलब I will explain after you people explain. I will explain. You all be with the vibrations. सब तैयार रहो. And उन्होंने मैसेज भेजा है वो थोड़ा तबीयत खराब है उसको रेस्ट करना है बट फिर भी वो आएंगे जब वो आप आएंगे. So life after death. Are you interested in this topic? Tell me yes. Yeah. Here we introduce Dr. Hans Williams and wonderful to have you here. Hans,
if not physically, virtually, and otherwise also you're there with us in our hearts because our message is the same. We share the same vibration, same message. Dekhte jao abhi. Today I want to speak about our transition into the spiritual realms, which many call death. The spiritual world has given us some very practical and interesting suggestions which most people are not aware of. Let's look at them. For instance, we can ask ourselves, what do we prefer, cremation or burial? These days about 60% choose cremation over burial in America. It does have some economical, hygienic and ecological advantages compared to burials. Most religions have different laws on cremation and burial. For instance, with a few exceptions, traditional Jews bury the dead within 24 hours. Traditional Muslims believe only in burials. Most of Christianity has opposed cremation because of the Bible quote on the resurrection of the physical body on Judgment Day. However, the Catholic Church has lifted its ban on cremation in 1963. To make the right choices for ourselves and others, it may help us to firstly look at what actually takes place at the moment of death. Let's start with a person who has lived by the spiritual laws of love for the most part and has no fear of death because he knows life is eternal and will continue in the spiritual world after his material existence. As the soul unfolds itself from the physical body, तो मरने के बाद क्या? ओके, मरने के बाद क्या होता है और ये अभी समझा रहे हैं. the silver cord or the information band, the connection to the body is cut. That is the moment of death for everyone. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब आत्मा और शरीर, ओके, हम कभी बोलते हैं मर गया, ओके, जब वो मर गया तो आत्मा जो है is connected to the body with one silver cord. सिल्वर कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है. For such a prepared soul, there linger no more any energetic ties or attachments to its mortal shell. Then, depending on the death, the soul first stands next to its deceased body and now continues to breathe in a totally different rhythm. It is helpful to remember that the soul can now not only hear every word spoken in the vicinity, but also sense all the thoughts and feelings of people in the room and beyond. Now, तो ये जो सिल्वर कॉर्ड है, ओके, ये जब कट होता है ना, तो फिर वो आत्मा चले जाता है, यानी कि उस द अदर वर्ल्ड. लेकिन उस टाइम तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, ध्यान से सुनिए सभी लोग, क्योंकि हम सभी लोग को देखते हैं, गुजर जाते हैं. तो जब भी वो सिल्वर कॉर्ड जब तक कटता नहीं है, वो आत्मा उधर ही रहती है. तो आत्मा को सब कुछ फील होता है, महसूस होता है. हमारे विचार, हमारे फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर, तो हम रोते हैं या हम क्या करते हैं, ओके, उसको सब महसूस होता है. तो फिर आगे समझाते हैं. spiritual beings like its guardian angel and the higher developed souls of former friends and relatives assist the soul. They welcome the soul that is parting from matter and help it find its place in the beyond. तो ये जो जब आदमी मर जाता है, ओके, हम मर जाते हैं, तो जो हमारे एंजल्स है, दिस इज एज पर वॉट एवर ही इज, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग, ओके, देन वी विल डिस्कस ऑन इट. तो हमारे जो एंजल्स है, लाइक इफ यू स्पीक टू कपिला, यू नो, व्हेन वी आई हैड डन वन ऑफ हर प्रोग्राम्स, सो शी सेज ऑल द एंजल्स आर ऑलवेज देयर अराउंड अस. तो जो angel, yeah, Master Jennifer, she says always the angels are there. And then Kapila was sharing these timings, you know, 11, 11, 12, 12, 13, 13, and 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. ये जब भी आते तो angels are around. ऐसा कहा गया है, तो I don't put my head too much. I say yes, it is there all the time, but उस time में special आता है. तो ये जो angels है, okay, वो angels जो है, वो आत्मा को स्वीकार करने के लिए वेट कर रहे हैं. दे आर वेटिंग टू वेलकम द आत्मा जो
जिसको छुट्टी मिला है या जिसका एक एक जर्नी खत्म हुआ। For such a soul, death is nothing but graduation from the earth school. It is a celebration. तो ये जो आत्मा है, आत्मा के लिए क्या है? देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है, ओके? आत्मा के लिए धरती जो है एक स्कूल है। आत्मा के लिए ये जो धरती है एक स्कूल है, और स्कूल में जैसे 10वीं में हम ग्रेजुएशन करते हैं, ये 10 स्टैंडर्ड खत्म हो जा रहा, 10th ग्रेड इज ओवर, देन वी गो टू कॉलेज, कॉलेज खत्म हो गया, हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आत्मा के लिए भी वो सेलिब्रेशन है। That is the ideal transition from the material world into the spiritual realms. In such an instance, it really doesn't matter whether the body is cremated or buried after at least 2 or 3 days, because some souls need a little longer to fully disconnect from the body. तो उनको कुछ 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 आत्मा को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लगता है, कभी-कभी 13 दिन भी लगता है, जैसे हमारा संस्कार में बोलते 13 दिन। 13 दिन पूरा डिस्कनेक्ट होने के लिए कभी 2-4 दिन या और भी टाइम लगता है, तो तब तक वो उधर मौजूद है, देख रहे हैं। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि कभी भी आप, कोई भी गुज़रता है, रोना, उसके ऊपर रो दो अपने छाती ठोकना और अपना मर-मर के, ऐसा जो टिपिकली हम पिक्चरों में देखते हैं, ये आत्मा को पसंद नहीं है। आत्मा भी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको वो जो आप हम लोग करते हैं तो ऑटोमैटिकली उनको आ जाता है। सो प्लीज़ बी अवेयर कि आप किस, यस, जेन्युइन में हुआ कुछ ठीक है, लेकिन उसको कंप्लीट करो। Unfortunately, people do give this little thoughts when a loved one has died, and often feel that they have to hurry up and get the body out of the way now that the person is dead. They may also choose a church service or funeral home to make the funeral arrangements, which can be very somber at times. Are we sure that the person passing over really wants to see and feel the crying and sadness at such events? Because most likely, the soul may be present at the ceremony. Do they want to be mourned? तो आत्मा को क्या पसंद है? आत्मा चाहता है कि सब लोग रोए, धोए और शमशान घाट में, चर्च में या क्रिमेशन ग्राउंड में रोए, छाती पीट के रोए। नहीं, वो नहीं चाहता है। आई हैव रेड मेनी ऑफ द पीपल एनडीई, near death experiences, many and many videos I have seen. तो कभी भी एक ही लफ्ज है, एक ही लफ्ज है कि they want to see people happy. They don't want to see anyone crying. अभी ये देखो, ये पढ़ो। Christ reminded us, do जीसस क्राइस्ट ने क्या लिखा है? not mourn your dead, for the one who mourns the loss of a person does not consider the gain of the soul, which, if it has lived in me, the Christ, enters into higher consciousness spheres of life. क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं कि डू नॉट मोर्न द डेड, यानी कि जब मर गया किसी को, उसके ऊपर रोना धोना जेन्युइनली थोड़ा टाइम के लिए ठीक है, बट जनरली you just celebrate. I will share with you, and if Nina is there, she will share how we have decided our end, whenever it is, we have already declared to each other. So बात करते हैं जब भी वो है। You may want to watch my special video on mourning and grieving that takes a closer look at this. But the whole situation is very different when the person did not prepare for death. If he lived solely on the material level, without spiritual aspirations, without being oriented to the divine, then his thinking and striving, his whole consciousness is strongly fixed on the living conditions of the human life on earth that he desperately holds on to. The soul of such a person is very attached to the physical body because it is the only identity and life the soul knows and believes in. At the time of death, it resists the letting go of the body and thereby can delay the cutting of the silver cord. From the medical perspective, such a person may be declared dead because there are no more any brain waves.
But in truth, this soul may still be very much connected via the silver cord to the body. तो कभी कभी डॉक्टर्स बोलते कि ये मर गया क्योंकि ब्रेन वेव्स नहीं चल रहा है ब्रेन खत्म, लेकिन शरीर फिर भी द हार्ट इज येट बीटिंग। सो हालांकि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मर गया है, लेकिन आत्मा अभी भी जुड़ी है। और उस टाइम जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने में जितना दुख होता है, दर्द होता है, वो आत्मा को महसूस होता है। Anything that now happens to the body is still intensely felt by the soul. For instance, organ transplants are done to patients that are declared brain dead. जब भी डॉक्टर ब्रेन ये मर गया मतलब ब्रेन मर गया, तो ब्रेन मर गया तो वो लोग ट्रांसप्लांट करना शुरू करते हैं। लेकिन जब ट्रांसप्लांट करने में जो पीड़ा आती है और पेन आता है, वो आत्मा को महसूस होता है। But where the heart still beats and the body breathes, this ripping open of the body and taking out of organs is fully sensed and experienced by the soul. पूरा आत्मा को अनुभव होता है। This is the reason why the body needs to be sedated for the transplant to avoid the famous Lazarus effect or other violent reflexes by the organ donor, which is caused by the intense pain the soul experiences. तो इसीलिए उस टाइम भी शरीर को एनेस्थेसिया देते हैं। जब मर भी गया तो शरीर को एनेस्थेसिया देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अगर नहीं दिया तो जो ऑर्गन है, हार्ट, लिवर, पैनक्रियास, जो भी निकाल के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो वायलेंट हो सकता है। इट मे गिव द जर्क्स, क्योंकि वो जो आत्मा है उसमें दर्द पीड़ा महसूस हो रहा है। इमेजिन आपका यू आर कॉन्शियस और आपका शरीर कोई खोल दिया, एनेस्थेसिया नहीं दिया, कितना दर्द होगा। तो वैसा ही शरीर जब मर गया और ब्रेन मर गया, लेकिन जो ऑर्गन्स अभी भी जागृत है, तो आत्मा को उतना ही दर्द होता है। I've explained it more in my video on the horrors of organ transplant. एक वीडियो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, वो बाद में देख सकते हैं, आज नहीं, लेकिन मैं आपको दूंगा लिंक। So let me repeat this. The soul of a medically declared brain dead person is not routinely separated from his body, which still breathes and has a heartbeat. Gabriele writes, if the information cord that is also a conductor of pain and connects soul and body is not totally detached from the one dying, then the so-called corpse that is to be cremated or buried experiences something similar horrible to the removal of organs. तो यही कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने उसको ब्रेन डेड बोल दिया, मतलब ब्रेन मर गया, तो शरीर अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। उस टाइम ट्रांसप्लांट किया तो आत्मा को उतना पीड़ा दर्द होता है। For such a person it may require several days and even more until the silver cord is fully severed. It really depends on how the person lived in the temporal. It helps to remember that dying is a process. Therefore, many cultures have the custom of a wake that can take several days for good reasons. But even when the silver cord is इसीलिए हमारे इंडियन में 4 दिन, चौथा होता है, 13वां होता है, तो 13 दिन तक आत्मा उधर घूम, मतलब it can be present there at that time. So whatever you do, be or have, those 13 days are very, very important. completely cut, the consciousness of a spiritually underdeveloped soul can still cling to the lifeless physical body, not via the silver cord, but via magnetic currents or threads. The more the person's thoughts and interests were concentrated on the earthly life and the enjoyment of material pleasures, the greater these magnetic currents, the attachment to the body, its physical house, since it thinks that life is possible solely in a material body. Can we now see that burial, especially embalming or mummification, can result in such souls clinging to its beloved
but decaying body for decades, if not centuries. Religious beliefs can cause the same result. For instance, the belief that on Judgment Day their buried bones will be resurrected again has kept many religious, indoctrinated souls attached to their graves for hundreds of years. Let's also talk about the many souls that are not even aware that they have died, particularly in sudden death situation, like तो बहुत से जो आत्मा है, सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट में उनका उतना जागृति नहीं है कि वो मर गए। वो आत्मा तो मर गया, मतलब शरीर मर गया, लेकिन आत्मा को यकीन नहीं हुआ कि मर गया, बिलीफ नहीं हुआ कि मर गया। शरीर खत्म हो गया, इसका वो उनको बिलीफ नहीं हुआ है। बहुत से टाइम ऐसा हो सकता है। accidents, or where the person simply does not believe in life after death. They can be very confused. कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जीवन है, इस पे अगर मान्यता नहीं है या बिलीफ नहीं है, फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। And disoriented. They can become what we call earthbound souls and can cause harm to themselves and others. There are millions of them roaming among us here on earth. I speak about them in my video on Death and Dying Part 2 and Spirit Possession. Christ reminds us the opinion क्राइस्ट बोलते हैं of the human being forms the bond which, after the passing of the body, draws the soul back to where it once enjoyed its passions and pleasures as a human being. If you remain an alcoholic until the end of your life on earth, your soul will be among alcoholics again. कहते हैं अगर आप अल्कोहलिक थे, ओके, तो अल्कोहलिक थे तो मरने के टाइम में आप दारू पी के मर गए, तो वापस भी आएंगे तो अल्कोहलिक्स के वही सत्संग में वापस आएंगे, वही मतलब ड्रिंकर्स के साथ आएंगे। अगर आप एकदम खूब ग्लटन यानी कि खूब खाते थे, ओके, और सिर्फ खाना ही आपका जीवन था, तो वापस अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वैसा ही वातावरण में आएंगे। The soul of a glutton will feel at home where there is an abundance of food and stimulants. It will be drawn to where people focus their main attentions on pleasures and the like. The soul of a drug addict will once again be where the same people live, where these substances can be obtained. अगर आप ड्रग एडिक्ट होते, ड्रग मतलब खूब इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स लेते हैं, तो अगला जीवन में भी वही वातावरण, वही सत्संग आपको मिलेगा। The one who indulges in desires and passions will once again, as soul, be among those who think and live similarly. Can we now grasp how important it is for us to know as much as possible about the spiritual aspects of life? Because a further possibility is that a soul which does not have any inklings about the spiritual life and does not know where they are going upon death can get caught up in the dark and push themselves back into another incarnation instead of moving forward. The spiritual world points out that every person dies differently depending on his or her beliefs and circumstances. This video was inspired by these books. All of them are listed below this video with links for more information. जय गुरुदेव। आज का सब्जेक्ट एकदम रियल है, फैक्ट है। मैंने ये पढ़ा है, मेरा बगल में ऐसा एक बुजुर्ग आदमी 96 वाले गुजर गए थे। 13 दिन खाली भजन करते थे, घर में कोई भी रोया नहीं था। तो जिंदा है, आत्मा इधर ही रहता है। महसूस किया इस बात को, मेरे सास गई तभी भी रोना धोना नहीं, तो आत्मा को दुख लगता है ये। लेकिन ये नया ये बात थी, ये जो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको दर्द होता है, ये मालूम नहीं था। अगेन वो अभी एनेस्थेटिया देते हैं, वो भी मालूम नहीं था। नया चीज सुनने को मिला। थैंक यू गुरुजी। बहुत अच्छा, बहुत और हम अच्छा। सत्संग में हैं, हम लोग इधर ही आएंगे, ये भी कंफर्म हो गया। आपने बोला ड्रग एडिक्ट हो उसमें जाता है, दारू पीने वाला उसमें जाता है, तो हम लोग सत्संगी है, हम लोगों को मालूम हो गया, हम आगे इधर आएंगे। आप डीवेल में वापस डीवेल यस ऑफ कोर्स। इसमें और विल गो डीपर आल्सो। यस किरण।
मुझे आज ये नया सीखने को मिला कि जब सोल या फिर जब बॉडी जब सोल में रहता है, तब अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है या फिर वो अटैच्ड है मटेरियल लाइफ से, और आफ्टर डेथ वो अटैच्ड है अपने बॉडी से, तो जो उसकी एनर्जी है, उस सोल की बॉडी के प्रति जो एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसके वजह से अगर वो चाहता है तो बॉडी डिके नहीं होती फॉर लॉन्गर टाइम। सो ये एक नया इंफॉर्मेशन था। अगर कोई ह्यूमन जब जिंदा होता है और वो स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं है और वो बहुत हाँ। अटैच्ड है मटेरियल लाइफ से या फिर खुद के बॉडी से, तो हम्म, अगर उसके डेथ के बाद जब वो सोल डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो सिल्वर कॉर्ड से बॉडी को अटैच हुआ है, तो right. उसके एनर्जी के वजह से, और जो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, उसके एनर्जी के वजह से और अटैचमेंट के वजह से वो बॉडी से इतना अटैच है कि वो बॉडी भी डिके नहीं होती, या फिर डिके मतलब खराब होना, स्पॉइल हो जाना। हम्म, तो उसके एनर्जी की वजह से वो बॉडी बहुत लॉन्ग समय तक फ्रेश रहती है, या फिर उसको बहुत टाइम लगता है डिके होने के लिए। समझ गया, समझ गया। ब्यूटीफुल, शी इज अ डॉक्टर, सो आई वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हर। यस शुभम, दो दो लाइन बताना। हाँ। जय गुरुदेव। मैं मुझे सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन था कि ये जो लाइफ रहता है ये एक लूप होता है, जैसे सतयुग द्वापर त्रेता एंड इट कंटिन्यूस। सो हम्म, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये इंसानी जन्म फिर से मिलेगा। तो आई यूज टू कीप दिस इन माइंड कि अभी जो गलत कर रहा हूँ या अभी जिस एडिक्शन में हूँ जो भी है, नेक्स्ट बर्थ जब मिलेगा तब उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आई यूज टू पोस्टपोन इट लाइक, लेकिन आज समझ हाँ, में आया। तो थैंक यू हाँ। सो मच मनोज जी, आपने क्लियर किया। ये प्रेशर बन गया, अभी क्लियर करना पड़ेगा एडिक्शन। सत्संग में आना वही तो पड़ेगा। हमारा हमारा जो सेगमेंट इंटेंडिंग है ना, पूरा भगवत गीता है, क्लियर ही कर रहे हैं। जब आप सेगमेंट इंटेंडिंग अच्छी तरह से करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट को क्लियर किया, थैंक यू। प्रेजेंट को क्लियर किया, थैंक यू। प्रेजेंट को पिछले जन्मों का, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल मेमोरीज, वो बताएंगे, तो थैंक यू। और फिर जो आने वाला है, हम वही बीज डाल रहे हैं। विल गो डीपर। यस वैशाली। नमस्ते, जय गुरुदेव। मनोज जी, आज एक ध्यान में आया क्योंकि लास्ट 7 years में मेरे डियर एंड वंस 3 जन की डेथ हो गई, लेकिन हम 12 दिन बहुत रोते रहे, बहुत ही कम उम्र में गए इसलिए। लेकिन ये भी ध्यान में आया कि मेरी सासू माँ के हमने आई डोनेट किए थे, तो उनको तकलीफ हुई होगी, वो अभी जान पड़ा जो नहीं पता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वंदना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु जी, कई बार सुना था कि जैसे एक इंसान का कोई पार्ट कट जाता है, मतलब जैसे पैर कट गया, तो कई बार उस इंसान को फीलिंग होती रहती है कि उसका पैर दर्द हो रहा है, ये सुना था। तो अगर वैसे ही अगर सोल अगर पूरा बॉडी छोड़ के जाती है तो नेचुरली वो अटैचमेंट फील होती ही होगी उस हिसाब से। वेरी नाइस। Okay, Jai Gurudev. Uh, I agree that Atma is there after the death, nearby, maybe for a few days or 13 days, everything is okay. I have experienced few things. I have lost 5 near and dear ones. But and even we should not cry. That is also I agree. But about organ donation, I do not agree because I feel it's a good deed we are doing and we are saving so many people's lives. And I strongly believe in organ donation, eye donation, organs, of course, if the brain is dead. But my family has done even body donation. And for example, mother-in-law wrote in her will that my body should be donated. And it is useful for dissection to medical students. So we as a Jain, we believe everything should be donated and no attachment. Jai Gurudev. Wonderful. So nothing wrong. Everything is, everyone has their own opinion, and this also has another side to it, which we can donate. ऐसा नहीं. They just said when the brain is declared dead. आप याद रखो. जब brain is declared dead, wait for the body to be declared dead. इतना जल्दबाजी मत करो कि वो मर गया, क्योंकि that is why dead people can become alive also. Okay, why? Brain dead हुआ, अभी शरीर dead नहीं हुआ है पूरा. तो शरीर हो जाएगा तो then we can do that other this thing. Okay, so anyway, we'll look at it later, and you can go by
Hi, I'm Hans Wilhelm. In my video called Why Are We Here, we explored the reason for our life here on Earth. We saw that Earth is not our final home, but a school or a college for souls to learn to love again. Today, तो ये वीडियो जो है, ओके, धरती, पृथ्वी एक स्कूल है. आप ये दिमाग में फिट कर लो, ओके, फिट कर लो, ओके, कि ये जो जीवन, धरती, पृथ्वी एक स्कूल है या कॉलेज है. Today I will go a little deeper into this school curriculum. We will see how we can make the most of this very short visit, so when we leave our physical body behind, we can graduate with honors. जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हम ग्रेजुएशन विद ऑनर्स कर सकते हैं. तो मुझे ये याद आता है, ओके, कौन सा याद आता है कि छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए. छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए, सतगुरु की शरण लीजिए, खेल ये मैदान में. ये जो लफ्ज, ये जो वाक्य है, खेल ये मैदान में, खेल ये मैदान में, खेल ये मैदान में, गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो. तो ये पूरा जीवन जो है एक खेल, ये पृथ्वी जो है एक स्कूल है. स्कूल के टाइम में, स्कूल के एंड में या कॉलेज के एंड में हम ग्रेजुएशन करते हैं. इन द वेस्टर्न कंट्री दे थ्रो द कैप्स, you know, they wear the black robes. We go for graduation day in the college, in universities. In how much we, I remember how much I celebrated when I completed a 10th, when I completed a 12th, when I completed the 15th. How much I celebrated. Of course, my celebration was different at that time. What I did was different, but I celebrated, you know. तो वो celebration करना है. as you have seen in my other videos, we are all spiritual beings on our way home to God. And बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो अभी ये पृथ्वी है. as souls, we are slowly moving through the purification spheres toward that spiritual home. To speed up our journey, we have been given the unique opportunity of short incarnations into a physical body onto planet Earth. In other words, तो ये हम धरती पे आते हैं और कुछ सीखने के लिए आते हैं. और धरती पे क्यों, उधर भी सीख सकते हैं, हाँ सीख सकते हैं, लेकिन धरती पे जो सीखना है बहुत फास्ट होता है. इसीलिए धरती पे हम जन्म लेते हैं, क्योंकि इधर सीखना बहुत, इन कंपैरिजन टू द एनर्जी वर्ल्ड, उधर सीखना स्लो है, धरती में बहुत फास्ट होता है. words, with great likelihood, we have been here many times before in what is called the cycle of reincarnation. Now let's assume that this here is our soul, and we are somewhere here in the lower purification spheres. Why would we want to incarnate into a physical body here on Earth? It has a lot to do with our karma, the law of consequences. Law of karma, यानी कि law of consequences. Karma is everything that we have done against the law of love, all our negative sensations, thoughts, words, deeds, passions, our pressing human desires, and so on. Here in the purification spheres, it takes much longer to clear up any karma, because our perception of time is very different here. Furthermore, all the एनर्जी वर्ल्ड में बहुत टाइम लगता है, यू नो, अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लगता है. तो इसीलिए ये बोलते हैं कि हम धरती पे क्यों आते हैं, क्योंकि इधर कम समय लगता है. कम समय में हमारा ग्रोथ ज्यादा हो सकता है अगर हमने एक्सपीरियंस किया. The negativity that we have once caused others will be felt here by us more intensely, because we do not have the earthly body that usually buffers any blows and pain. But here on Earth, we have natural healing methods as well as painkillers that can reduce such pain. But most of all, on Earth, we can incarnate and be together with other souls
with whom we have some karmic ties and to whom we want to give love, support, help and service. Most souls who decide to come here to this Earth College stay only for less than 800,000 hours. Before they come, they discuss their future life with their guardian spirit, who informs them about the lessons they will learn, but also about possible pitfalls, the opportunities, the difficulties, and so on. But some souls are not so patient. They are so eager to continue reliving their past earthly incarnation, passions, and pleasures that they push themselves into another incarnation. They are unfortunately poorly prepared as to what they might encounter in their new life in College Earth. Because you see the words in encountered in College Earth. तो देखो how beautifully पृथ्वी एक स्कूल है या कॉलेज है, ये एक दिमाग में फिट करो। हम जैसा हम स्कूल में जाते नहीं, ये भी एक खेल है, ये भी एक मूवी है, और मूवी के अंदर देखो वेरी इंटरेस्टिंग, कभी आपने ये which movie was that, Om Shanti Om, Shahrukh Khan, you remember that movie? Anyone seen it? तो ओम शांति ओम में देखो, हम पिक्चर के लिए जाया, पिक्चर का नाम है ओम शांति ओम, लेकिन वो पिक्चर के अंदर एक्टर पिक्चर में काम कर रहा है, और इन द मूवी जो हम थिएटर में जा रहे हैं, थिएटर में वो स्क्रीन दिखा रहा है और वो भी व्यक्ति अंदर थिएटर में काम कर रहा है। यस और नो? तो जैसे हम पिक्चर में जाते हैं और पिक्चर के अंदर पिक्चर देखते हैं, हम धरती पे आते हैं, हम धरती पे स्कूल है, ये धरती पृथ्वी एक स्कूल है, स्कूल के अंदर हम दूसरे स्कूल में जाते हैं, जैसे शुभम जाता है या कोई और, हम सब लोग गए हैं, स्कूल के अंदर दूसरा स्कूल, कॉलेज के अंदर दूसरा कॉलेज। ये है लीला। लीला मीन्स वी थिंक वी आर alive. Well, it could be a dream also, so that mystery is what we can either enjoy or we can go on complaining about the history. So now let's assume we were well prepared by our guardian spirit and have fully agreed to incarnate into a human body here in College Earth. As we leave the spiritual spheres, we are going through what is commonly called the veil of forgetfulness. Everything about our spiritual past and our true spiritual identity will less and less be part of our conscious memory. Why is that so? Because we need to be completely free of any old stuff and tragedies of the past when we face our daily challenges. Can you imagine we would remember all the mess that we have caused in past lifetimes? Such memory would simply paralyze us too much to function in this world. Unfortunately, forgetting who we are and from where we came has a very nasty side effect. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत लोग पूछते हैं कि आपको कैसा मालूम है कि हम वापस आ रहे हैं। ये तो एक ही जीवन, in Western world many of them live like there's only one life, there is only one life, and here in the Eastern world we say it's life after life after life after reincarnation, and in God Speaks he explains it differently, Meher Baba ji, but I'm just saying ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हमको सब कुछ याद होता पिछले जन्मों का, तो हमारा ब्रेन, मतलब we would be highly totally in a wreck or confused people. तो इसीलिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन भूलने से एक माइनस पॉइंट है। क्या माइनस पॉइंट? We think we now are the center of the universe and everything must rotate around us. माइनस पॉइंट ये क्या है कि हम तो सब कुछ भूल गए ना, तो हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हर कुछ का, मैं ही सब कुछ, I am the center of the universe, I am important, I am the person, I am the most important person, ये हम सोचते हैं। This is the origin of our bloated ego.
ये आई आ जाता है, अहंकार आ जाता है. So here we are now in our earthly spacesuit, which is a physical body for our soul. Always good to remember that we are not a body, we only live in this body. हम शरीर नहीं है, हम शरीर में जीते हैं. Now, what is then the daily lesson plan here in College Earth? What is our prime purpose of being here? हमारा पर्पस क्या है ये पृथ्वी में या स्कूल में या कॉलेज में? The first lesson is freedom, because God is freedom. We learn freedom through self-recognition. पहला जो तत्व हम जीते हैं is why we come is for freedom. Freedom from anything that binds us. That is everything that does not correspond with God's all-forgiving love and all-embracing mercy. This can be persistent unkindness, unwillingness to forgive, ruthlessness, selfishness, negative habits, addictions, and all limiting and stressful beliefs and thoughts, and much, much more. But it also includes our karma. We need to undo and dissolve all negative karma. As mentioned in my video on how the planets rule us, our karma is stored in the huge causal computer of the stars and planets that make up the material and fine material cosmoses. These repository stars and planets are in constant movement, and when they reach a certain position, they download portions of our karma back to us on Earth. These portions are carefully attuned to the strengths of our soul. Downloads are building blocks that make up a good chunk of our days from moment to moment. It is like a mighty current of energy which brings to each one of us what is relevant to us today to recognize and clear up. Every moment, every second, every minute, and every hour of our day is carefully orchestrated for us. Our various events throughout the day are basically nothing other than reproductions of our own past productions. ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है. जो भी हमारा अनुभव हो रहा है, प्लीज ध्यान से गौर से सुनिए. जो भी हमारा अनुभव हो रहा है आज, अच्छा, खराब, बहुत बुरा, बहुत अच्छा, ये हमारा पास्ट प्रोडक्शन का फल है, फल. Think about it. What we have once sown is now coming back to us. जो हमने बीज बोया है वही चीज हमको अनुभव हो रहा है. This can be anything from small sensations, feelings, thoughts to pain. विचार, दर्द, फीलिंग, ओके, थॉट्स, फीलिंग, पैशन, दुख, सुख, जो भी. Illness, blows of fate, and so on. These are the negative aspects that we once fed into the huge causal computer. तो ये सब जो हुआ है, ये हमने कहीं ना कहीं उसका बीज डाला है. इसीलिए जब हम सेगमेंट इंटेंडिंग करते हैं और हम बोलते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, मेरे मुताबिक जो नहीं हुआ है वो, थैंक यू जो मेरे मुताबिक में नहीं हुआ है उसको थैंक यू बोलते हैं, तो आप वो कर्मा को क्लियर करते हैं. The law of karma is an ironclad law of the purification spheres. But nothing is too heavy that it couldn't be lightened and dissolved with God's love and mercy, because God's love is the highest energy, and everything else is of lower frequency. The highest frequency influences all lower in frequencies and can transform them. तो जब हम प्रेम में जीते हैं तो प्रेम इतना हाई फ्रीक्वेंसी है कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. Now we also understand why every day is so very different to every human being around the world. Every moment of the day is uniquely tailored for each person to become free again. So the person who cuts us off in the morning traffic is no accident. अभी ध्यान से सुनिए, ओके, गौर से, कि जो व्यक्ति हमारे ट्रैफिक में बीच में आ जाता है वो एक्सीडेंट बाई चांस नहीं हुआ है. The disparaging comment by our co-worker is no accident.
जिसने आपको गाली दिया है अपने ऑफिस में, आपको बुरा भला कहा है, वो एक्सीडेंट नहीं है। The unexpected text message is no accident. किसी ने आपको मैसेज में गड़गड़ गड़गड़ बोला है, वो भी एक्सीडेंट नहीं है। The argument in our family is no accident. परिवार में आर्ग्यूमेंट होता है, तू मैं होती है, अनबन होता है, वो भी एक्सीडेंट नहीं है। The disturbing news on television are no accident. आपने न्यूज़ देख लिया टेलीविज़न में, डिस्टर्ब हो गए, वो भी एक्सीडेंट नहीं है। Everything happens exactly according to plan, and our prime task here is to clear up what radiates to us from moment to moment. तो ये सब एक्सीडेंट नहीं है। हमारा काम क्या है? क्लियर करना, क्लियर करना, क्लियर करना। जीरो लिमिट्स बुक मैंने बताया, क्लीन क्लीन क्लीन, डॉक्टर ह्यूलेन। इसमें भी बोलता है कि हमारा काम क्या है? क्लियर करना। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? क्लियर करना। लिया 1 आवर या लिया मैसेज जब आप भेजते हैं, लिया 1 आवर, जब आप रीफ्रेम करते हैं, आप क्लियर करते हैं। जब आप इस तरह से करते हैं और मुस्कुराते हैं, आप क्लियर करते हैं। जब आप पास ऑन करते हैं, आप क्लियर करते हैं। जब आप अवेयरनेस बैंड चेंज करते हैं, आप क्लियर करते हैं। जब आप किसी को याद करते हैं, गुरुजी को याद करते हैं, पास इट ऑन करते हैं, क्लियर करते हैं। हमारा काम है, जो भी हो रहा है हमारे अनुभव में, वो हमने कहीं ना कहीं बीज डाला है। अभी उसको इन गुरुजी's लैंग्वेज, SSY लैंग्वेज, स्वीकार करना है। एक्टिवली स्वीकार, डायनामिकली स्वीकार, टोटली सरेंडरफुल स्वीकार। The law of grace can dissolve all this karma, but we have to learn the lesson first before we ask for grace and divine help. The key is So beautiful see the law of grace. forgiveness. The law of Once we the law of grace can clear the karma, but we have to we have to first experience, then it will clear, or then the grace will come. In Guruji's language, quote Guruji, you will never get the grace of the Guru. You got to earn the grace of the Guru. So this is quote Guruji. So in one of the talks he says, everyone says, Guruji bless me. Arey, what will Guruji bless you? You have to earn the blessings. तो वही है, जब आप स्वीकार करते हैं, किसी का फोन आया, मेरे परिवार में ऐसा 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 हो रहा है, मैं क्या करूं? ऐसे करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपको वही चीज स्वीकार करना है बस, और वो भी डायनामिकली स्वीकार। recognize our mistakes and truly repent. मेरे लास्ट 4 दिन में एटलीस्ट मुझे 6 या 7 लोग ने अपने इन लॉज का कंप्लेंट दिया। इन लॉ, मेरे सास ससुर रहते हैं। मेरे सास, ज्यादातर ससुर नहीं, ज्यादा सास ही होता है। ऐसे मुझे आया लास्ट 4 दिन में। तो ये सास ऐसा है, सास ऐसा है, तो सास ऐसा है, आप ऐसा सांस लो बस। From the heart, our negative behavior and purify it through restitution, forgiving and asking for forgiveness, we will be dissolved in our soul and also in the causal computer. तो जब हम माफ करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, तो वो सब क्लियर होता है। सास ससुर को माफ करो सब लोग, अपने हस्बैंड वाइफ को माफ करो सब लोग, बच्चों को और जिसको भी, बॉस को भी। But there's also the law of projection, also called the law of correspondence. It simply says that whatever pushes our buttons in the outside world is something unloved and unresolved within us. Take, for instance, the TV example I gave earlier. When we are getting very upset about some news about wars, our first question should always be, where am I at war within myself? Or, where am I personally at war with others in my thoughts, words and actions? तो किसी ने डिस्टर्बिंग न्यूज सुन लिया, ओके, समझो कोई जंग चल रहा है और डिस्टर्बिंग न्यूज आपने सुन लिया, ओके, टीवी में, तो आपको अपने आप को पूछना है कि मेरे जीवन में मैं किसके साथ जंग में हूं, मेरे जीवन में किसके साथ मैं जंग में हूं। This should give us some food for thoughts, if we really want to get to the bottom of this. So all these daily building blocks that are coming back to us
from the causal computer are karma, karmic relationships, unloving components, habits, characteristics, as well as mirrors to help us clear up everything that is still unloved, unforgiven, or unresolved in our soul. I'd like to mention one other form of karma that comes back to us and can severely influence us. That are our thoughts, all our persistent and unloving thoughts. All thoughts are energy, and no energy ever gets lost. They eventually come back to us and can totally occupy our mind for hours and days and influence how we feel. A typical example is somebody who has upset us, and in our mind we are keeping an inner dialogue of what had happened and what we should have said, what we did say, or will be saying to him. Such a thought dialogue can go on for a very long time, and as we are totally absorbed in this thought bubble, we are completely missing all the other various daily building blocks that come to us from moment to moment via the day's energy. तो हर विचार एक एनर्जी है, और अगर हमने विचार को ऐसे पकड़ कर रखा, कौन से टाइप के विचार, वो बेकार है, वो कमीना है, वो रस्कल है, वो कुत्ता है, वो ये है, मेरे सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे है, मेरा ये ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा वाइफ ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है। इस तरह से अगर हम सोचते जाते, तो वो अपना दिमाग को इतना ऑक्यूपाई करता है कि जो एनर्जी आना था हमारे शरीर को, जो the other energy which was supposed to come to the body, it is not being entered to the body. बॉडी के अंदर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्याला भरा हुआ है। भरा क्या है? भरा किसके लिए है? पूरा यही टाइप के विचार के से भरा हुआ है। And there is one other danger or risk we take when we incarnate here on earth. That are the negative forces or souls that want to feed on us. They are real. There can be earthbound souls who have only a tiny amount of life energy left and are in desperate need of energy from others. They use fear and suffering to get these energies. You can learn more. एक और जब हम जन्म लेते हैं, ऐसे नेगेटिव फोर्सेस आते हैं जिनको एनर्जी चाहिए, तो वो आपके जीवन में अगर आए और आपसे एनर्जी सक कर रहे हैं, about them in my videos on spirit possession, on evil, and on the Luciferian doctrine. Now, all this makes Earth a very tough school for tough souls. It can really look overwhelming, all that heavy stuff coming at us. But this is nothing compared to the gigantic amount of unlimited help for every challenge. Help that each and everyone has access to 24/7. That is the whole divine heavens trying to assist us in so many ways. Naturally, we all have our guardian spirit who has not left us and whose prime goal is to assist us through these tasks. But most of all, there is the Father, Mother God, who wants us back into the pure heavens as quickly as possible. For this reason, we are given what is commonly called the God spark and Christ spark located in our soul. Remember, our body is the temple of God. Without this immeasurable, powerful, extra dose of divine energy, we could not make it here because the negative influences are so powerful. So there is a huge variety and amount of divine help available to give us strength and to transform any negativity. But we have to ask for that help and also ask for guidance if we don't understand the messages or signals of the day. And the second lesson of every day is love and service. Every encounter throughout the day is our opportunity to love. That is basically the only lesson that we have to relearn to love. तो पहला जो लेसन था, पहला is freedom. Pehla, okay. What is God? God is freedom. Okay. I had prepared these questions to ask him. Okay, but we will ask him because he will come maybe anytime today or even next time when he is well. So, freedom is God. Okay. Second, what is God? God is love. Okay.
प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है. So love in the form of action is service. Okay, so here it is. Love again. And when we love, we also are open to selfless service to others. And these others are not just other human beings who we know and care about. No, it means every human being, also every animal, plant, and mineral kingdom like Mother Earth. All situations and interactions with others we find ourselves in throughout the day are also part of this carefully orchestrated school called daily life. Again, the prime purpose is to reawaken our unconditional, unlimited, and all-inclusive. तो बार बार वो वही लफ्ज बोलते हैं. This daily school called daily life. Earth called school. Love potential within us as well as being of service to others. And Earth is a perfect place where our human weakness and limitations can be transformed into strength and certainty through the application of love. For this we need the interaction with other people. And the best motivation. क्या करना है? सिर्फ प्रेम में जीना है. हमने आपको वाइब्रेशन चार्ट बार बार दिखाते हैं. एक जगह 0 to 50 डर पे जीना, 60 to 100 प्रेम में जीना. तो प्रेम में क्या करना है? प्रेम में ऑटोमेटिकली क्षमा आ जाती है, वल्नरेबिलिटी आती है, ओपननेस आती है, शेयरिंग आता है, केयरिंग आता है, ब्लेसिंग आता है, दुआ आता है. ये सब जो है प्रेम में आता है. For our inner work is our love for God, the Father, as it is directly connected to our love for our fellow men and women. Love for God can only be achieved by loving everyone. There is absolutely nothing and no one who cannot be transformed and changed by love. Let us also remember that our love for God and fellow humans can substantially improve our own life and living conditions. Loving brings everything into a higher vibration or frequency. It lifts everything, including our own life in every respect. You and my lesson is to love, to love, to love, to love, and nothing else. And love always includes loving oneself, forgiveness, and helping and service to others. सर्विस देखो, हम लोग ने आपको सबको सेवा का मौका दिया है, सबको एक मौका दिया है. Every single person can take this opportunity. Okay, I have taken it. So have you. You have also taken. Yes. Another great help is the golden rule: do unto others as you wish them do unto you. बाइबल में लिखा है और हर किताब में लिखा है, do unto others what you would like others to do unto you. That is a very practical guidance to learn the lessons the day brings. Whenever we make the right decision, we feel the joy and improvement in life that comes from working with the divine laws. I personally also found the old Hawaiian teaching of Ho'oponopono a great way to get अभी वो हो'oponopono के बारे में बात करते हैं. Thank you, love you, sorry, forgive me. उसके बारे में बात करते हैं. started by saying the following 4 sentences quietly in our mind: I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. We say this to every human being we encounter. The important thing is to say it with deep conviction, and if that is difficult, we can ask the one who dwells within us to give us unlimited help and strength. Now can we better understand that this amazing drama which we are involved in day by day is originated by ourselves and for ourselves. Nothing ever happens to us, only for us. Therefore, by देखो, कुछ भी हमारे जिंदगी में अब हमको नहीं होता है, हमारे लिए होता है. बहुत फर्क है. हमको नहीं होता है, हमारे लिए, यानी कि the universe plan is always bigger, the universe is always favoring us. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे लिए अच्छा है, वो उसकी इच्छा है.
by taking 100% responsibility for whatever happens to us and no longer blame others or circumstances, we are improving our life and future. तो जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम करने से कुछ फायदा नहीं है। जब हम ब्लेम स्टॉप करते हैं, वही जीवन है, वही लेसन है। So now you know why I make these videos. Like everybody else, I have to keep reminding myself that my life is a part of an intense curriculum of lessons to which I have agreed to prior my birth. But the most important lesson for all of us is to love unconditionally, unlimited, and all-inclusively. There are many books on the subject, but my favorite is Live the Moment by Gabriele. It goes in great detail about everything I have discussed in this video. You can find this little book with its green cover on Amazon. Very interesting, देखो। If he will be live at some point of time, if not today, some other day, we'll have him again. अभी आज तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन that time directly you can ask some questions. Yes, Pratik. Yeah, such wonderful message he's passed, and so nowadays I do realize that whatever has happened not my way, I realize that ये bounce effect है, before even coming to this session, I realized कि यार ये मैंने पहले create किया था, इसलिए ये मेरे पे बाउंस बैक हुआ है। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों में। एंड तो मैं स्माइल करता हूँ, अरे वाह, ये तो मैंने ही गलत किया था, तो अभी मेरे लिए आया है, तो अभी मैं हंस के इसको रिलीज करता हूँ। सो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हंसता हूँ वो मोमेंट पे, मैं उसको मैं धन्यवाद देता हूँ उस मोमेंट को। तो उससे अभी अच्छा लग रहा है कि मैं वो कर्मा को रिलीज कर रहा हूँ। मैं वापस ये साधना में इतने हम जुड़े हुए हैं कि अगर कुछ हमारे हिसाब से नहीं भी होता था, हम वो मोमेंट में किसी और को गाली नहीं देते हैं, हम अपने आप को धन्यवाद बोलते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा। ब्यूटीफुल। जो आपने बोला, सब लोग ऐसा ही करो जैसा उन्होंने बताया, क्योंकि आप ही प्रोड्यूसर है, आप ही डायरेक्टर है, आप ही एक्टर है, आप ही रामा है, आप ही रावण है। तो किसको ब्लेम करना है? आपने ही क्रिएट किया, तो उसमें क्या बोलना, किसको क्या बोलना है? कैसा क्रिएट किया? आप थोड़ा गौर से सोचो, आपका रिवाइंड करो अपना रील, मालूम पड़ जाएगा किधर आपने कहां से ये बीज डाला है। मेरे सास ऐसी, आपने कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे विचार रखा है, इसलिए सास ऐसी है, या ससुर ऐसा है, या बॉस ऐसा है, या हस्बैंड ऐसा है, या वाइफ ऐसी है। यस प्रकाश जी। यस, जय गुरुदेव। जब पहले वाले ये सेशन में आपने बताया था कि भी आदमी की टोटल डेथ होने के बाद में भी इसमें प्राण रहते हैं, तो ये एक रियल इंसिडेंस मेरी वाइफ का ही है। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि वो जब 8-9 साल की थी तब उसके डेथ हो गया था, मतलब तो सब गांव वाले वगैरह सब इकट्ठे हो गए थे उसको ले जाने के लिए, कपड़े वगैरह सब वो निकाल के व्हाइट कपड़ा वगैरह सब लगा दिया था। फिर उधर गांव वालों ने, किसी ने मतलब है ना, कहा कि इसको एक बार और पल्स देखो, ये देखो कुछ। फिर गांव में एक सिस्टम होता है, वो एक लोहे का गरम वो फोर्सेप्स होता है ना गरम, उसको लेके उसके सिर के ऊपर इधर लगाया, मतलब एकदम गरम गरम। तो वापस वो जाग उठी, मतलब जाग उठ गया, प्राण आ गए उसमें, मतलब वापस। तो मेरी वाइफ मुझे कई बार बोली कि देखो मैं तो चली गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मैं बच गई, वापस आ गई मैं। मतलब ये इंसिडेंट मेरी वाइफ ने कई बार मुझे कहा है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भाई आदमी के पल्स बंद होने के बाद में इसमें प्राण रहते हैं। वो गर्म चीज जैसे वो लगाया उसको तो जाग उठी। आप भी जाके वापस आ गए कोविड में। हम यस यस यस, ट्रू ट्रू। मैं भी वापस आया, मैं भी उधर जाके टच करके आ गया, मतलब यस ट्रू, वेरी मच ट्रू, वेरी मच ट्रू। नहीं सुनाई दिया? ओके, हो गया है। हाँ, जय गुरु। एक्चुअली मुझे वही पता नहीं चलता था कि लाइफ किसके लिए है। सब कुछ कर रहे हैं बट आई एम नॉट गेटिंग इट। इसमें 1-2 लेसन्स तो मिले कि फ्रीडम एंड लव एंड सर्विस, ये 2 चीजें मिली। जय गुरुदेव। थैंक यू, थैंक यू। Thanks so much Manoj ji for give me क्या कहते हैं, हिंदी में बोलती हूँ मैं अब। It's hard to in between. अभी
मेरे को रियलाइज हुआ कि दिस इज अ स्कूल, ये स्कूल है और हम यहाँ पे आए हैं और सीखने के लिए आए हैं। चैलेंजेस होती है तो फिर उससे हमें सीखना है कि हमें किस तरीके से अच्छे बनना है, पॉजिटिव ही थॉट्स रखने हैं और हर एक के अंदर गॉडलीनेस देख के जाना है। हम जितने पॉजिटिव रहेंगे इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास रहेगी। हमारे आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं, हमारे आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, दे आर रेडी फॉर अस टू हेल्प एंड हमें हमें सबको हेल्प करना है, इसीलिए हम आए हैं। तो जो कोई भी चैलेंज आ रही है, जस्ट स्टार्ट, बी पॉजिटिव, स्टार्ट हेल्पिंग एवरीबडी, टच एवरीबडी, सबको पॉजिटिव बनाओ अपने पॉजिटिवनेस से। ओके, वंडरफुल। थैंक यू। हम लोग ये अभी देखेंगे, ओके, री इनकारनेशन के ऊपर। री इनकारनेशन यानी कि मरने के बाद हम वापस आते हैं, वही चीज वो एक्सप्लेन करेंगे अभी। Hi, I'm Hans Wilhelm, and in this video in the Life Explained series I would like to talk about reincarnation. What is reincarnation? The word carne of course means flesh, and incarnation is the process of a soul or spirit entering a physical human body. And reincarnation means the repeated return of that soul or spirit into a human body. Let's take a closer look at it. We are by nature spiritual beings, also called souls. Our true realm of existence is of course spirit. So why would some of us want to incarnate, meaning enter the physical body here on earth? Now the reasons are manifold. Some come here to observe, some come here to assist other souls, some come to explore, some come to simply enjoy physicality. But the vast majority of us come here because we are bound to the cycle of reincarnation. तो ये हम लोग धरती पे क्यों आते हैं? उन्होंने बोला बहुत से कारण हो सकते हैं। हम एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, हम इसको सीखने के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम री इनकारनेशन, क्योंकि हमारा एनर्जी ही हमको वापस लाती है। क्योंकि हमारा जो कर्मा है, कर्मा मतलब जो भी हमने विचार सोचे थे, कि कर्म किए थे या सोचे थे या फील किए थे, वही एनर्जी वापस लाता है, क्योंकि वही उसका जो लेसन्स है वो कंप्लीट करना है। there are, according to me, there are three main reasons why we come. एक तो हमारा खुद के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, दूसरा हम जीव लेते हैं ताकि सभी को हेल्प करने के लिए, और तीसरा बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म आना ही है। पहले दोनों में चॉइस है, तीसरे में चॉइस नहीं है। जो अभी बता रहे हैं री इनकारनेशन, चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको आना ही है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए मतलब नॉट एक्शन, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस एंड फीलिंग्स। उसका जो हमने जो बीज डाला है, उसको जो बीज डाला है उसका जो है वो टू एक्सपीरियंस the seeds of what we have sown is why we have come. Which means we still have unfinished business here on earth. Reincarnation gives us the opportunity to complete and heal anything that has not been resolved or completed in a previous lifetime. As souls, we intuitively know what we still have to clear up. Any hurt, any pain, any loss that has not been atoned for or forgiven will call us back into another life. Nobody is forcing us to go, but we know that we cannot spiritually advance until we have healed everything down here. We therefore have the deep desire to make amends or experience the effects that others once suffered from our thoughts, words, actions, which is called karma. Therefore, out of our own free will, we choose to reincarnate once again. By the way, more on what happens before we incarnate is on my video Life Before Birth. Now the souls with whom we often have the most of our karma
are the members of our future family here on earth. सबसे ज्यादा कर्मा किसके साथ हमारा पास है? कर्मा जो जुड़ा हुआ है his family members. They also have come here for the same reason, to heal and overcome past karmas with each other and with us. अभी जो बात करने वाले हैं उसको गौर से सुनिए. Very super interesting. Okay, देखो. Therefore, they are usually of similar vibration than we are. And this is important because we know that our soul can be only attracted to parents of similar vibrations. We may have been in this particular family many times before, but in different constellations and maybe in different sects. It can be that we have been the mother or father of our future parents. तो ऐसा भी हो सकता है. हम लोग क्यों ऐसे जुड़ते हैं फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ? क्योंकि हमारा वाइब्रेशंस ऑन द सिमिलर फ्रीक्वेंसी. दूसरा कि हम इट कैन बी पॉसिबल कि इस टाइम मेरे मम्मी डैडी जो है पिछले जन्म में मैं शायद उनके मम्मी डैडी थे, या हस्बैंड वाइफ थे, या भाई बहन थे, कोई भी रिश्ता, या इफ आई एम अ मैन दिस टाइम आई कुड हैव बीन अ वुमन द लास्ट टाइम. It could be any combination. Previous lifetime, and together as a family we have created causes that now change us together as karma. And now we have the chance and reincarnate again and loosen these chains and undo this karma, which will result in mutual freedom. What happens here in this family applies to all other people who we meet in our life, at work, in clubs, our neighbors. We either are attracted or repelled by some of them, and that usually means that there is some karmic ties that needs to be cleared up. Now you may wonder, if this is all true, why don't we know much about karma or reincarnation? Well, there is no absolute need to know about reincarnation to have a successful life here on earth. We are all given some wonderful tools that tell us how to live our lives on earth. Most souls incarnate into cultures that have one dominant book of wisdom. That can be the Torah, the Bible, the Quran, and so on. And in all of them, they have the same basic rules of life and the golden rule that says, don't do unto others what you don't want them to do unto you. They say it in different words, but the meaning is the same. And in the Western world, we also have the 10 Commandments and the Sermon on the Mount. They are straightforward, very simple, not complicated. In a few words, we are advised not to kill, not to lie, not to cheat, not to steal, have no idols, and respect our parents and help and assist all those less fortunate than we are. But most of all, also to love and honor God who is in everyone and everything around us. The problem is that we also know about all these basic rules of life prior our incarnation. But once we are here on this earth plane, we easily forget. We are bombarded by so many distractions and temptations that we can easily forget our ideals and the reason why we incarnated. We get lost in our ego, materialism, and selfishness. So once again, we might make new or similar mistake as in the past, and then we are even more trapped in the cycle of reincarnation. But if we live consciously, by the basic rules of life, if we live consciously, मैंने जागृति से हम जिए तो क्या हो सकता है? Like the golden rule and the 10 commandments, we can bring our soul into a higher vibration. That means when we die, our soul will then be attracted to a higher level of existence than we were before we incarnated. Eventually, we will no longer need this life and death cycle here on earth and continue our education and our growth of consciousness in the higher realms. Now, some of us may wonder why we usually don't remember any of our previous lifetimes. This is purposely hidden from us because we should live in the here and now
And exact knowledge about our former incarnations would only burden us. Think about it. We may have hundreds of former lives, and many we have done awful things. Now, this knowledge alone would overshadow our decisions in carrying out our daily tasks. Once we understand the dynamics of the law of reincarnation, everything falls into place. Suddenly everything makes sense. Why are some poor, others are rich, some healthy, others sick, why there are wars, and so on. I have always been amazed by the incredible love and perfection that rules our magnificent universe. Naturally, this was only a very short overview, and I hope you are inspired to study more on this incredible subject. Did you know that reincarnation was a fundamental part of the original Christian teachings and that it was later banned by a Roman emperor? Very interesting. Reincarnation was the original part of Christian teachings. ये क्रिश्चियनिटी में भी था, लेकिन रोमन जब आए थे उन्होंने उसको निकाल दिया. Come join me in part 2 of reincarnation and I will tell you more about it. You may also enjoy the videos on karma and how karma works. Okay, anyone would like to share 2 lines on this? I more deeply gaya कि I am responsible for everything. Family अभी members. तो आप ब्लेम करना बंद करो. मैं आपका पैर छोड़ता हूँ. हाँ, कि आप बंद करो ब्लेमिंग. I'm not blaming now. हो गया तो Like, फिर ठीक. more deeply it is like I'm responsible for everything. और कपिला भी जोकिंग में भी ब्लेमिंग नहीं करते हैं. जोकिंग में भी खेल गए. लुइस ए सेज दैट इवन जोकिंग मेक्स इट रियलिटी. तो मुझे मालूम है आप जोक करते रहते हैं, लेकिन जोकिंग दैट इज व्हाई वो बार बार वही चीज होते रहता है. यस, बताओ कपिला. मैंने ये रियलाइज किया कि सब कुछ कितना सुंदर 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 प्लान है दिमाग नहीं लगाने का. एवरीथिंग इज ओके इन वन मोमेंट और नेक्स्ट मोमेंट में एवरीथिंग इज नॉट ओके. वही करना है बस जिंदगी भर. ओके ओके. राइट. थैंक यू. Jai Gurudev. Actually, I was driving, so sir, thank you so much for this wonderful topic. This was an unsolved mystery since long going on in my mind, but today many of the clarity, many things got cleared in my mind, and it is so wonderful. Wow, well, I cannot express by words, but it is very superb session. It's like mind blowing. And I was always, मैंने बीच में भी बोला था, एक हमने लिया था नो डेथ करके कोविड के पहले 2019 में, which is really it is somewhere related to today's session. It's like that. So fantastic. Thank you so much. And really one thing which I really understood from it is like जो हम लोग thoughts में जाते हैं, again we go into thoughts, हम सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, या जो भी है विचारों में हम लोग घूमते जाते हैं. बट द थिंग व्हाट ही टोल्ड अबाउट इन द लास्ट वीडियो दैट आवर कर्मा गिव्स अस ऑल द सिग्नल्स. ओके, जैसे कि अगर कुछ हम लोग टीवी में वॉर के बारे में देखते हैं, ओके, सो इमीडिएटली इट इज अ सिग्नल फॉर अस कि हमारे अंदर क्या वॉर चल रहा है. अगर हम वो थॉट्स में घूमते रहेंगे तो वी विल नॉट कम टू नो द प्रेजेंट मोमेंट के व्हाट वी नीड टू रेक्टिफाई इन अवरसेल्फ. So which is very beautiful. Thank you so much. Thank you. वो I will just give you one example. उस टाइम एक ये there was one shootout in that VT station. Remember that कसब का ना? Yes. तो Yes. तो वो उस टाइम में मैं आ रहा था कातर कड़क. आई थिंक इट वाज इन 2010 और समथिंग लाइक दैट. सो उस टाइम में कातर कड़क से आते थे तो हमने वी स्टेड इन वन ऑफ आवर मेडिटेटर्स हाउस, रवि खिरे. ओके, उनके घर पे रहे क्योंकि हम वापस नहीं आते थे. सब धमाल हो रहा था, बॉम्बे बंद, ये बंद, एवरीथिंग. वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, शूट आउट भी हुआ था, ऐसा कुछ तो हुआ था. एंड नो शूट आउट हुआ था. And the Taj was in fire. Okay,
they showed, so they said, see this thing, you cannot go back to Bombay. आप देखो टीवी में. तो मैंने देखा, मैंने 10 मिनट देखा. 10 मिनट में उन्होंने 30 सेकंड या 1 मिनट का क्लिपिंग 10 टाइम रिपीट किया. जैसे मैंने देखा कि ये 10 टाइम रिपीट हो रहा है, मैं बोला बस बंद करो. उसके बाद मैंने देखा ही नहीं कुछ दिनों, मतलब आई नेवर एवर सॉ दैट न्यूज़, ओनली वंस आई सॉ. क्योंकि मैंने बोला कि अगर मैंने ये देखा तो मेरे जीवन में क्या हो रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं क्या कर सकता हूँ, फिर देखकर क्या कर सकता हूँ? उधर से 4 मंत्र दे सकता हूँ सब लोगों को. ताजमहल के में जो लोग मर गए, जो लोग उधर है, जो लोग है, जो भी इन्वॉल्व है, उनको 4 मंत्र भेजो. तो दिस इज कॉल्ड, you don't get into the karma, but you pass on the vibration. We'll see one more video, okay, on the 7 chakras. जो 7 chakras है उस पर वीडियो देखते हैं, क्योंकि हमने आपको 7 chakras सिखाया है. आप करते हैं चक्र बैलेंसिंग के नहीं, हम देखते हैं. ओके, एटलीस्ट आज से शुरू करो. I invite you to take a look with me at the 7 energy centers of the body, also called the consciousness centers or chakras. What is their purpose and how do they affect our well-being? We have heard that everything that exists is permeated and kept alive and evolves by a cosmic energy that we can call the all-power, all-spirit, flowing ether, or simply God, or love. This spirit energy also keeps our spiritual and material bodies alive and vibrant. But how does it do that? Our etheric body, our soul, corresponds more or less with our physical body. The center of our spiritual body is what the mystics call the nucleus of the soul. It is the spark of God, or God spark, and it is situated in the region of the crown of the head. And this spirit energy flows into our body through this nucleus. The energy then flows from the nucleus on the left side of the body along the spine down to the pelvic area into the so-called collective basin. Then the spirit powers flow again on the right side along the spine up to the nucleus of the soul. On its way, the spirit energy runs along 7 junction points of energy, which are also called consciousness centers, or in the East, they are called chakras. The purpose of these consciousness centers is to distribute the spirit power through many ramified paths via the nerves to the individual organs of the body. So each center is supplying a certain area of our body with the spiritual energy via our nervous system. It is interesting to know that the 4th consciousness center, near our heart, it's a kind of switching and pumping station that draws the energy up from the collective basin and then sends them up to the nucleus. These 7 consciousness centers all have a certain ethical quality. तो ये ऊपर से आता है, इधर बोलते हैं न्यूक्लियस, लेकिन हमारे शास्त्र में सहस्रारा. तो इधर से एनर्जी आता है क्राउन चक्र से नीचे जाके फिर ऊपर आता है. They are the 7 divine powers of divine life. Starting from the bottom to the top, they are called order, will, wisdom, earnestness, patience, love, and mercy. Let's look at them individually. The first center is called order and is situated above the collective basin in the region of the coccyx. It feeds, among others, the sex organ, bladder, rectum, pelvis, with hip joints, knee and ankle joints. The second center is called divine will and is situated in the region of the sacrum, slightly behind and below the navel. It feeds the kidneys with the uterus, large intestine and colon. The third center is called divine wisdom and is located in the lumbar region. It mainly feeds the spine with spinal cord, stomach, small intestines, liver, gallbladder, pancreas and spleen.
The fourth center is called earnestness. It is located between the shoulder blades near the heart. Naturally, it mainly feeds the heart, lungs, and bronchi, spinal cord, and ribs. In this center, there's a special power active, that is the Christ spark, which I spoke about in details in a separate video. This Christ light is an additional, supportive, redeeming, and healing power within us. Therefore, many mystics call this center also the Christ center. The fifth center is called patience or kindness, and it is in the region of the neck. It feeds the thymus, tonsils, thyroid gland, parathyroid, windpipe, larynx, throat, and teeth. The sixth center is called divine love, and is between and behind the eyes. It feeds the eyes, ears, the organ of equilibrium, nose, pituitary gland, and pineal gland. Above it is the seventh center, which is called mercy or gentleness, and it is in the back of the head near the pituitary gland. It feeds mainly the cerebrum and the cerebellum. These consciousness centers are light-filled, pulsating and rotating structures in our spiritual body to provide every organ and every cell with the life-giving cosmic energy via the nervous system. In a healthy body, the spirit power flows to all parts of the organism without obstructions. It is only when an organ is no longer supplied with sufficient spiritual energy that illness arises. This happens when the respective energy center is blocked. Then the cells become sluggish and ill. तो जो हमने चक्र बैलेंसिंग बोला है थोड़ा सा अलग है हमारे शास्त्रों के, बट मोर और लेस इट इज सेम, 7 सेंटर्स, लेकिन हमने फर्स्ट बोला है ये ओके, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अन्नहाट, विशुद्धा, आग्नेय, सहस्रार। इधर से आता है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो ये चक्र खुलता है। इसीलिए मेडिटेशन अगर जो लोग करते हैं रेगुलरली, उधर से डिवाइन एनर्जी आता है। यू आर ओपनिंग द क्राउन चक्र, जहां से यूनिवर्सल विजडम आता है। कहने का मतलब है ये जो मूलाधार, ओके, वी से आई एम, आई फील, I do, I love, I speak, I see, and I know. Okay, these are the 7 statements. Or in other words, this is like, ये सब जो वीडियोस है DYL ऐप में है। अगर इसके बारे में जानना है DYL ऐप में, प्रैक्टिकल टूल्स में चक्र लिखो, सब मिलेगा आपको। This is, I am, इसका जो कार्मिक अकाउंट है ये वाला is shame, I'm sorry, fear, shame, guilt, hatred, suppression, confusion, अहंकार। ये 7 चीज जब हम ये करते हैं तो ये 7 रिलीज करते हैं और आपका पूरा एनर्जी चेंज होता है। और फिर ये इसका जो अफर्मेशंस है, आई एम ग्राउंडेड, आई एम क्रिएटिव, I am confident, I am loving, I speak with empathy, with compassion, I see clearly, and I understand, or I know I am a nobody. ये 7 है। इसके बारे में you can always see these chakra videos which we have all in the DYL app. Okay. Yes, Manoj, thank you so much for helping me on chakra cleansing. I think I need that for sure. That will help me. One question is, when should we do this? This is before meditation we should do this? Because after meditation we do visioning. But if we clean before that, will that help? You can do it anytime. I do it first thing in the morning and last thing in the night before sleeping. Thank you so much. That's what I do. You can mix it. No, you can mix it with lotus gratitude. जब मैं lotus gratitude करता हूँ उसी टाइम करता हूँ। It's part of the lotus gratitude. Yes, sir.
कि अभी जितना वीडियोस देखा तो उसमें ये लगा है कि जैसे हमारे फिल्म लाइन में होता है कि एक टेक हुआ और उसमें अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो सेकंड टेक लिया जाता है। तो ये आज जो हमें हमारे पास जो जन्म मिला है, जो परिवार मिले हैं, तो वो हमारा सेकंड टेक है। तो पहले जो हमारी गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को सुधार लें और अच्छा अच्छा करके हम इस जिंदगी को जी लें। बहुत अच्छा। आप तो एक्टिंग फील्ड में हैं, तो आप तो जी। आप फिल्म के अंदर फिल्म बना रहे हैं। ये भी हमारा क्या बात धरती है। फिल्म एक्टर है, और आप एक्टर के अंदर एक्टर हैं। हम हमेशा बोलते हैं, गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज से कि ये जो एक्टर्स है ना, एक्टर्स, वो दे आर स्टार पीपल। स्टार क्यों? क्योंकि उनके पास एक मौका है कि लाइफ को हर पल जीने का। वो एक्टिंग, शाहरुख खान को देखते हैं, वो रो रहा है तो हमको आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में वो इतना डीपली जीते हैं पिक्चर में। ओके, इमोशन इतना डीप दिखाते हैं ताकि वो ऑडियंस को वो भी इमोशन आ जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, गुरुजी भी बताते थे, कि वो लोग सोचते हैं कि जो एक्टिंग का फिल्म, वो एक्टिंग एक प्रोफेशन है। वो ये भूल जाते हैं कि वो ये धरती में भी एक्टर है। तो अगर वो वही एक्टिंग का जो स्किल है, जो एक्टिंग में दिखाते हैं, वही स्किल अगर पूरे जीवन में वो इस्तेमाल करे, तो उनका जीवन, दे आर एनलाइटेंड पीपल। जी। Because this life is also, they think that is professional acting, this is separate। ये सेपरेट नहीं है, ये भी एक्टिंग है, वो भी एक्टिंग है। तो आपके पास एक एडवांटेज है जो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लेते हैं वो। जय गुरुदेव। तो जो 2-3 वीडियोस जो भी हमने देखे अभी, बहुत ही क्यूट तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इलस्ट्रेटिव वे से बताया है कि कितना सहजता से जैसे बच्चा भी समझ सके। ओके, कोई सोल होता है, भले पता हो ना हो सोल है या नहीं, क्या है, अनुभव नहीं है या याद नहीं है कि वो अनुभव क्या है, लेकिन फिर भी अच्छा कुछ सोल है, धरती पे आता है, प्रेम है, लव है, फिर अटैचमेंट है, फिर कर्मा का बॉन्डिंग है। इट्स अ वेरी नाइस वे टू पुट एवरीथिंग, द थ्योरी और लाइफ एक्सप्लेन इन शॉर्ट। बट मजे की बात क्या है कि हमारा जीवन सच में कैसा चलता है जब हमें अवेयरनेस में देखते हैं, तब पता चलता है कि चाहे इंडिया वाला हो या फॉरेन वाला हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न हो, हर कोई घूम फिर के वही बात कहता है, 19-20 का फर्क है। तो इतना सिनर्जी जिसको कहते हैं, वो असल में यहाँ पे वो सिनर्जी दिख रही है कि हाँ, सब है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी सब में एक कॉमन चीज हमेशा रहती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिफरेंट वे, लिटिल डिफरेंट लुक आउट ऑन द सेम थिंग। और वो सेम कोई नहीं है, हम खुद ही है। तो थैंक यू मनोज जी एंड एवरीवन टू हैव दिस। No more, we will have a live interaction, they will be very different। So आपको समझो, आज एक मौका मिला, हमने उनको इंट्रोड्यूस किया आपको। और क्योंकि उनका तबीयत, अभी मैसेज आया है उनका कि आई रियली नीड टू रेस्ट, आई वुड लव टू रिकनेक्ट एंड वी लव टू हैव इट अगेन, ऐसा उन्होंने मैसेज भेजा है। तो डेफिनेटली दैट्स बीइंग वेरी काइंड कि वो वी विल हैव हिज सिनर्जी लाइव वंस अगेन। I to think only मेरा currency एक ही है, I deal in only one currency, that is samadhi, and I connect everything with samadhi. So for all the videos, like अगर हम ये कर्मा साइकिल में इन्वॉल्व है, that is my understanding, अभी मुझे I connect with samadhi and come to know that if I am into this karma cycle, और इसमें either I can call it a vicious circle or God's grace, दो में से एक कुछ भी मैं उसको समझ के चलूं. So what is the freedom from that? How do I get out of this cycle? And that is where I connected with our samadhi practice, 15 minutes twice a day. You are dead to the world, and you become dead to the world मतलब आप कर्मा साइकिल से अपने आप को अलग कर लिए for 15 minutes twice a day. And when you break that cycle of karma, and by every day जो थोड़ा करो, रोज करो, 15 minutes 15 minutes 15 minutes,
and you do that because samadhi is being detached with awareness, and you are going at your deepest level, at your core, and actually experiencing, not just intellectually understanding, but experiencing that which cannot be explained, जिसका कोई शब्द नहीं है. Okay, so it would be what is process called नेति, कि आप बोलो कि ये है तो ये नहीं है, अगर ये विलम बोल रहे हैं ये है तो वो भी नहीं है, because now our mind will try to manipulate and take this as a formula, और वो फॉर्मूला पकड़ के हम सोचेंगे कि मुझे मिल गया आंसर, एंड दैट बिकम्स अवर ट्रैप. तो वो भी नहीं है एंड वो भी है. तो ये ईच वन इज जस्ट क्लियरिंग अवर व्हाट इज देयर. हमारा जो जो ये जो चक्र का कंफ्यूजन स्टेट है ना, उसको निकालने का ये द नॉलेज प्रोसेस, द ज्ञान योग प्रक्रिया इज दैट. ये हमको इसको, ये जो चक्र है, हाँ, उसको कंफ्यूजन चक्र को क्लियर करने का तरीका है. और कंफ्यूजन यही है कि क्या है वो मुझे नहीं जानता हूं तो मैं नहीं कर सकता हूं. एंड कंफ्यूजन को वो निकालने का तरीका है कि जस्ट ड्रॉप इट, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट. ओके, सो दैट इज, थैंक यू वेरी मच. जय गुरुदेव. थैंक यू चंदन भाई. यस विजय जी, अनम्यूट करिए अपने आप को. यस. आफ्टर आज का लेक्चर सब सुनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि हर एक आदमी का जो लाइफ है, इट इज ए जिग्सॉ पजल, जिसमें से कौन सा भी एक ही पीस हम मिस नहीं कर सकते. इट इज ए अनइविटेबल पार्ट ऑफ योर जिग्सॉ. सो मेरे लिए मेरी वाइफ इट इज ए जिग्सॉ पजल का एक पार्ट है. बहन है, भाई है, पिता है, बच्चे हैं, ये जिग्सॉ पजल के पार्ट है. हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते. मेरे जो भी कुछ एनिमीज है, फ्रेंड्स है, दिस इज द टिपिकल मैसेज आई गॉट टुडे. ब्यूटीफुल. थैंक यू. थैंक यू. हमारे पिक्चर, ये हमारे पिक्चर के एक्टर, हीरो, हीरोइन, विलेन, कॉमेडी एक्टर, एक्शन एक्टर, डायरेक्टर सब है इधर. मुलक राज जी, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को. यस. यस. अब जिन भी एक्टर्स से अब हम लोग इस जन्म में मिले हुए हैं, उनसे हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा रहना चाहिए. क्यों, जो मदर इन लॉ हमारी अब है, वो हो सकता है पिछले जन्म में बहुत ही हमने उसको तंग किया है, इसलिए अब वो मदर इन लॉ बन के आ गई है और अपना हिसाब बराबर कर रही है. इसीलिए अपने बच्चों से भी आप प्रॉपर, अपने बेटे से प्रॉपर बिहेव करो, उसको मारो पीटो नहीं. नहीं तो आपका बाप बनने वाला अच्छा मारेगा आपको नेक्स्ट टाइम, ये याद रखो. सो ये कर्म बंधन जो है ना, ये छूटने वाला नहीं है. एंड अभी चंदन जी ने जो बताया कि 15-15 मिनट वो कर लेते हैं, दैट इज द टाइम जब कर्म बंधन क्रिएट नहीं हो रहे हैं. सो अगर वो उसको एक्सटेंड किया जाए, सो दैट विल बी द, आप उससे मुक्त हो रहे हैं. तो कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा तो आपने कोई कर्म बंधन क्रिएट नहीं किया है नया. बिकॉज जो भी आप करेंगे, उसका अच्छा हो या बुरा हो, उसको, उसके लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा. पर अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, तो वो उतनी चीज आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है. दिस माय अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो समाधि में हम बैठते हैं 15 मिनट, ये क्यों बैठते हैं? जो गुरु जी बहुत से कैसेट में बोले, आपको अनुभव होता है, लेकिन अनुभव होते समय आपको याद दिलाना है अपने आप को, ब्रेन को, कि ये क्यों हो रहा है. और वो जब आंख खोलते तो वही चीज आपको 24 घंटा लंबा खींचना है. दैट मीन्स यू नीड टू इन द से ये 15 मिनट में हम क्या करते हैं? साक्षी भाव. तो आंख खोल के भी साक्षी भाव, विचार को आने दो, विचार को जाने दो. वो चीज जो हम अलग है और वो भाग, दैट थॉट्स आर डिफरेंट. ये याद रखना है. दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस. प्रैक्टिस हमने आपको टूल्स दिया है. 1.5 घंटे में अलार्म डालो, फिर ये करो, फिर सुबह शाम ये करो, वीडियो देखो, लिया टाइम में लिखो. दिस इज ऑल टूल्स टू इंक्रीज द अवेयरनेस. समाधि में हम अपने दिमाग से और इंटेलेक्ट से अलग नहीं हो जाते. आपने एसएसवाई नहीं किया ना अभी? नहीं.
हाँ, तो वो करके फिर बाद में पूछो एक प्रश्न। मैं जानना चाहता था कि ये जो एक्टर्स लोग हैं जो पूरी फिल्म बनाते हैं एक्टिंग करने की, तो उनके भी कार्मिक अकाउंट बनते हैं। वो डेफिनेटली। हालांकि फिल्म बना रहे हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है उनका, लेकिन एक्टिंग जो कर रहे हैं तो भी कार्मिक अकाउंट उनका बनता है। ये उनके ऊपर निर्भर है, यानी कि सचमुच में सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हैं और दे आर कॉन्शियस दे आर एक्टिंग, देन डेफिनेटली नहीं बनता। हाँ, यानी अब कि इस किसी ने हाँ विलन का रोल किया, विलन का, ओके, उसका कोई कर्मा नहीं है, क्योंकि वो विलन के बाद में उसने रोल भूल गया, वो रोल उस टाइम तक किया। लेकिन सचमुच में ऐसा है तो फिर कार्मिक बनेगा ना ऐसा। हाँ तो मुझे मुझे कहा गया कि उल्टा भी होता है। बेन किंग्सली ने, जिसने गांधी जी का रोल किया, उसने उसके आदतों में बहुत बदलाव आया, जीवन में उसके बिहेवियर में बहुत बदलाव आया, क्योंकि वो गांधी जी जैसा काफी कुछ उन्होंने एक्टिंग करते करते उनका तत्व जी लिया। एक शेखर सेन है, शेखर सेन, वो कबीर का मोर देन 1000 ड्रामास ही डिड ऑफ कबीर। शेखर सेन इज अ पर्सन जो, इसका आंख में ही कैन नॉट सी क्लियरली, लेकिन गाता बहुत अच्छा है। तो मैंने उनका ड्रामा देखा था। ड्रामा इज मीन्स फुल म्यूजिकल ड्रामा, कबीर के ऊपर सिर्फ गाता है। तो वो करते करते उनको कबीर का तत्व आ गया। तो दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्टिंग। अभी कई बार बच्चों को ऐसा झूठ बोलते थे कि नहीं तेरा अभी ऑटो वाला आया भी नहीं है, हमारा पोता स्कूल जाने के लिए तैयार जल्दी नहीं होता है, तो उसको बोलते कि यूं ही बोलते थे तेरा ऑटो आ गया नीचे, ऑटो नीचे आ गया। तो पता नहीं कार्मिक अकाउंट बनता नहीं बनता। जय गुरुदेव। आज के उस वीडियो, दोनों तीनों वीडियो में उन्होंने बार बार बोला है कि हम इस लाइफ में जो आए तो वो एक हमारे लिए स्कूल है या फिर कॉलेज है। तो स्कूल और कॉलेज में सीखना क्या है एक्चुअली, और हम वापस आए इसलिए आए क्योंकि हमारे पास कर्माएं जो थे वो क्लियर करने के लिए हम यहाँ आए हैं, या फिर हमारे लाइफ में जो भी आ रहा है अच्छा बुरा जो भी आ रहा है वो हमने अट्रैक्ट किया है। ये सारी चीजें हम एक्चुअली एसएस में आए हुए और डिवाइल में सीख रहे हैं। तो ये सब सुनते सुनते मैं हर चीज से कोरिलेट कर रहा था कि कर्मा कैसे कट करना है, मेडिटेशन से क्या होता है, रोज फिर ये करो ये करो, ये सब जो दिन भर जो कर रहे हैं वो एक्चुअली मतलब आज थोड़ा ज्यादा विश्वास बढ़ गया है मेरा, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं कि हम इस स्कूल में या कॉलेज में आके हमको क्या करना है वो ऑलरेडी हम यहाँ सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब इतने सारे टूल्स जो है, और हर हर टूल में मतलब पूरा जितना उन्होंने बोला हर टूल उसका जवाब है। तो राइजिंग इन कॉन्शियसनेस और हमारा कर्मा कट करना और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें मतलब उसका जवाब है। तो सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं या हम सब लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो एकदम मतलब बहुत राइट पाथ पे है, और बस इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच। यस मनोज जी, ये मेरा क्वेश्चन है या क्या है आई डोंट नो, लेकिन मुझे आजकल कैसा हो रहा है कि एवरीवन इज एक्टिंग, वो मुझे फील हो रहा है, राइट? जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो नहीं, अरे अरे ये कैसे हो गया। सो आई फाइंड हर कि या वो रोल में है, वो एक्टिंग कर रही है। फिर मुझे वैसे मेरा भी हो रहा है कि मैं कहीं पे मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है एक्टिंग के प्रति। जब आप बोलते हो ना कि ये एक्टिंग 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 हम सब रोल कर रहे होते हैं, सो लाइफ में ये इंसिडेंट हो रहा है तो यू जस्ट हैव टू बी प्रिटेंड, प्रिटेंड बोलो कि एक्ट करना पड़ता है कि ये हुआ, बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, आपको खुशी बतानी पड़ती है, दुख बताना पड़ता है। सो मेरे सराउंडिंग में मुझे ये सब फील होता है कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, इसको ये हो रहा है। सो समटाइम्स आई बी जजमेंटल, समटाइम्स मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरी नियरेस्ट पर्सन है, उसको ये हो रहा है, ये इतने ड्रामेबाजी कर रहा है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये हो सकता है, इसको बोलते हैं डेजावू। डेजावू मतलब हकीकत भी है, रियलिटी भी है, या सपना है, ऐसा दोनों मिक्स होते हैं। लेकिन आपका बात सही है, सब कुछ रियलिटी है,
सब कुछ एक ड्रामा है, सब कुछ एक एक्टिंग है, और सब कुछ आप रियल समझो रियल। तो उसको उस पे यू डोंट गिव टू मच वेट फॉर व्हाट इट इज, गिव वेटेज टू क्लियर योरसेल्फ। आप वेटेज किधर दो? अगर ये सब बोलते हैं कि अगर जैसा भी आपने लास्ट स्टेटमेंट बोला कि ये ठीक है, तो ये सब जजमेंट हो गया। जजमेंट को पास इट ऑन कीजिए, कंपैरिजन को पास इट ऑन कीजिए, ये सही है या ठीक है उसको पास इट ऑन कर दिए। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने जो सही बोला है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 मंत्र या हंसते ये या keep on passing it on. So whatever happens to the body, keep on passing it on. Whatever happens in your mind, keep on passing it on. Whatever happens in your thoughts, everything pass it on. ओके फिर भी मुझे अभी एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक ऐसा एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे बच्चे के एग्जाम में मार्क्स कम आए, राइट? सो आई हैव टू एक्ट लाइक अ कॉन्शियस मदर कि तू इतना Right. कम मार्क्स I लाता। know. Wait. You have to act like a conscious mother, and you have to tell the child, "I'm so happy. I wish you fail. When will you fail? Then you are a conscious mother." Now I'll tell you more. Arey, beta, I'm so happy you got such wonderful marks. उसको 2 भी मिला ना 100 में से, जैसा मुझे भी 2 मिला था 100 में से। आप जाकर हग करो, वही है एजुकेशन। एजुकेशन का लेकिन मतलब एक ही चीज है, गले मिलो और उसको वाह वाह करो। मेरे लिए एजुकेशन यही है। मैं कभी मार्क्स देखा नहीं, ना सोचा है। मैं एक ही चीज देखता हूँ, जब भी मारता हूँ, बस वही है लेकिन मम्मी। के लिए वी हैव टू एक्ट ना मनोज जी। सराउंडिंग होते हैं, घर में लोग होते हैं, तो उनको लगता है ये कैसी माँ है, बच्चे के कम मार्क्स आ और रहे हैं तो भी खुश हो रही उनको भी जाकर गले मिलो, बस है। ओके उनको जागृत करो। आपके गले मिलने से जागृत हो गए, और वो आपको कोसेंगे तो वो आपके एक्टर बन गए। ये आपके अंदर में जजमेंट है तो कोसते हैं। मैंने आज तक, मेरी मम्मी है सामने, किसी की बात नहीं सुनी है। मैं अपनी बात सुनता हूँ। अपनी बात मतलब क्या? प्रेम की बात। प्रेम में कोई मुझे टोकेगा अगर, मैं उसका बात नहीं सुनता। तो आप बोलेंगे मैं बच्चे को फोर्स करती हूँ, मैं बोलूंगा आप कीजिए, मैं नहीं करता हूँ, आई डोंट सजेस्ट। कोई बच्चा था स्कूल में 2 दिन पहले 4 दिन पहले, मैं देखा था, वो रो रही थी, उसको नहाना नहीं था। मैंने बोला बहुत अच्छा, आप नहीं नहाओ, जब भी 2-4 दिन के बाद नहाना है, 10 दिन के बाद नहाना है, आप नहाओ। मैंने उनको बोला, दूसरे दिन वो नहा ली। जितना अगेन आप प्रेम, आप पढ़ाई के बारे में बोल रहे हो मनोज जी, तो ये बात सही है। अब मैं बोलूं कि वो बीमार है या बुखार है, राइट? मुझे वो पता चल रहा है कि ही इज एक सफरिंग। मिनट, ये अभी अभी ये क्लास गुरुवार का क्लास है, तो गुरुवार में बताएंगे। फिर भी एक वाक्य में, बीमार है, मेरा सजेशन है आप दवाई ले लो मेरे हिसाब से, लेकिन आपको वो नहीं लेना है, आपकी मर्जी। हाँ, मेरे हिसाब से ये होता है। आई कुड बी रॉन्ग, ये हमेशा लास्ट स्टेटमेंट बोलना, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ। ये वाक्य जबरदस्ती 100% बोलना है बच्चों को, मैं गलत हो सकती हूँ। देखो आपका प्रेम का भाव कितना होगा बच्चों के साथ। आज से ही एक्सपेरिमेंट करो, ओके? आज से ही। इसी को थैंक यू। बोलते हैं अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल स्वीकार। मैं कौन होता हूँ? आप अपने उसके मालिक नहीं है, आप तो सिर्फ ट्रस्टी है, ट्रस्टी। ओके। यस, मेरा क्वेश्चन टेक्निकल है कि इफ ब्रेन इज डेड दैट मीन्स नो सेंसरी फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो मोटर फंक्शन है या फिर प्री मोटर फंक्शन है, सारे बंद हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन डेड हो गया। तो जब शरीर से आत्मा बाहर निकलता है तो उस आत्मा को कैसे फील होता है पेन, जब हमारे रिलेटिव्स रोते हैं या फिर वो फील कैसे करते हैं इमोशंस। और सेकंड क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है डीप मेडिटेशन में कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इट इज लाइक अ थॉटलेस प्रोसेस। लाइक कोई थॉट नहीं था, कोई फॉर्म नहीं था, फॉर्मलेस, कोई लिमिट नहीं थी, कहीं कलर नहीं दिख रहा था। तो अगर सोल प्योर एनर्जी है
तो वहाँ थॉट नहीं रहेंगे या इमोशंस नहीं रहेंगे। जो हम इमोशंस फील करते हैं वो माइंड शिफ्ट के वजह से उस इमोशंस को हम फील करते हैं। तो शरीर के बाहर जब आत्मा आता है तो वो ये सब कुछ कैसे सुन पा रहा है, कैसे फील कर पा रहा है? तो मेरा जितना समझ है, ओके, अगेन मैं बोलता हूँ, आई कुड बी रॉन्ग ऑलवेज, ओके, माय स्टेटमेंट इज व्हेन एवर आई से आई कुड बी रॉन्ग, बट बिकॉज आई नो वी आर आल्सो लर्निंग। बट जहाँ मेरा है कि जो आप बोलते हैं, यस, प्योर एनर्जी है तो उसको फील नहीं होता है, लेकिन अभी तक वो जुड़े हुए हैं। यही तो बोल रहे हैं, वो सिल्वर कॉर्ड जो है अभी तक कट नहीं हुए। हमको लगता है कट हो गया, लेकिन वो कट नहीं हुआ है, अभी तक जुड़े हुए हैं, और हमने उसके ऊपर, शरीर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो वही वो समझा रहे थे। जब निकल गए और फिर काम किया, then probably this, like someone was saying, transplant the organs. Yes, you can definitely donate the organs and all. This is my understanding, that you can donate it when the thing is, the soul has left. This is mine, but we have to understand little more. When he comes next time, we will ask him, or ओके। more scientific person we will ask. तो फिर जो We- स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है और जो सिल्वर कॉर्ड से अटैच्ड है तो वो फील करता है क्योंकि वो डिटैच नहीं हुआ है। तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है और वो सिल्वर कॉर्ड से जुड़ अलग हो गया है। किरण, ये बात ना उसके लिए वेट करते हैं, उसके लिए ओके। क्वेश्चन, क्योंकि आई एम नॉट अ मास्टर इन दैट। आई एम माय फोर्टे इज पास इट ऑन। ओके, तो आई विल। मुझे ये अगर जो जो मुझे ये समझ नहीं आता है, मैं मानता हूँ, छोड़ देता हूँ, इतना नहीं, चलो कभी। लेकिन मेरे अंदर में जजमेंट कितना आता है, मैं छोड़ देता हूँ। मेरे बच्चों को फोर्स नहीं करना है, मेरा मेरा एक ही है, प्रेम का भाषा, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, सबको स्वीकार करना, केयरिंग, शेयरिंग, और 100-100 रुपया बांटते जाओ, 100-100 रुपया बांटते जाओ। प्रेम का भाषा, प्रेम का भाषा, प्रेम का भाषा। तो प्रेम का भाषा में आप बांटते जाओ, शेयरिंग करते जाओ, सेवा करते जाओ, एंड जस्ट, आई गेव वन पर्सन ऑन द रोड, okay, today I was walking, and I gave one taxi person, and you see, he told it will cost 250. No, it was costing 230. So he said, I'll charge you 300. I said, no. In my mind, I was going to give him 100 rupees more anyway, but I don't want it out of a demand. Demand nahi karo. I was going to give anyway 400, but he said 300. I said, no, I got off the cab. I said, no, I'm going. No, no, better, better. So it came to 230. I gave him 250. Then I gave him again 100 rupees. I said, see, this 100 is for Vishwa Kalyan, Vishwa Shanti. This. He's saying, yes, sir. Yeah, yeah, yeah. He smiled, and this. The second one I met on the road. Okay. And second one, he was just sitting like an old man like this, like a sort of drunkard sort of thing. I don't know whether he was drunk. मैंने जाकर उसको 100 रुपये दिया. He took, and he looked at me. He gave such a beautiful smile. Like I said, ये विश्व शांति के लिए है. ये जब हम गुस्सा होते हम देते हैं. तो आप भी को कभी गुस्सा आता है ना, तो 10 रुपया दे देना. तो we know what he answered. Beautiful thing he answered. He answered me, which I said, well, what did he answer? I said 10 रुपया भी आप दे दो. तो he said, अच्छा, तो नहीं. He told me, हाँ, मैं 1 रुपया दे सकता हूँ. ऐसे जरूर, आप 1 रुपया से शुरू करो. गुस्सा आया ना, तो आप 1 रुपया दिया करो. तो what he is calculating कि मैं देखो 100 रुपया, and he said पक्का I will do. 100 रुपया मिला ना, तो उसके पास कितना चांस हो गया? 100 का चांस हो गया. 100 टाइम गुस्सा रिपीट. कुछ तो दिमाग में गया. दूसरा, I went again forward. One lady was there, old lady. She asked like this. She was proper beggar. I took 100 rupees and gave it to her. Okay. She gave such a beautiful smile. कि वो smile में उसको, she's saying, I mean, is it real? Then I told her the same thing. ये विश्व शांति का. ये हम कर रहे हैं. आपको गुस्सा आता है? हाँ, आता है. 10 रुपया दिया करो सबको. ऐसा. And then I just, without waiting for answer, I just went walk. So every day is a chance to help people. आपका गुस्सा कम हो गया, दूसरों को हेल्प किया, दूसरे के मुस्कुराहट लाए, दूसरों को ये दे दिया. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? लाइफ में कुछ नहीं है. प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो. Don't bother
Just give love to everyone and penal love to your child by allowing them the freedom to go and fail, freedom to get low marks, freedom to not have bath, freedom to not listen to you, freedom to be indisciplined. When you give them so much freedom, they will listen to everything you say. 80% they will listen. ये है प्रेम मेरे भाषा में. Okay, this is my understanding. So I have lived like that and I continue. My mother has brought me like that. And that's why for me it comes very effortlessly. मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ क्योंकि my mother has brought me up like that way. So I bring up the people around. Even school में मैं ऐसा ही करता हूँ.